Hello, my dear students. When the going gets tough, the tough gets going. So let's be very tough and keep going into this learning process. And आपकी इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में बहुत ही वाइटल टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन ओनली एंड द टॉपिक इज कॉलिंग कन्वेंशंस. मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर इंटरव्यूज. किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू का दिस विल बी अ इंटीग्रल टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट कॉलिंग कन्वेंशंस दैट आर अवेलेबल इनटू प्रोग्रामिंग. एंड यहाँ पे दो कॉलिंग कन्वेंशंस हम लोगों को स्टडी करने हैं. उसमें से पहला कॉलिंग कन्वेंशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यूज, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट कॉलिंग कन्वेंशन दैट इज कॉल बाय रेफरेंस. बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. So let's move into the detailings about what are called by values, and the example that we are going to consider for studying this calling convention is a very famous example, that is swapping of two variables values, right? So let's move into the programming directly to see like what are the call by values concept and what are its advantages and disadvantages, and then we'll come into the need of call by reference, and फिर जाके सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट कॉल बाय रेफरेंस. तो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट कॉल बाय वैल्यूज इज. सो आई एम बैक इनटू द टर्बो सी. पहले कोडिंग के साथ चलेंगे एंड फिर डिटेल में डायग्राम ड्रॉ करके आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, राइट? So call by values, please pay very kind attention towards this particular concept, right? Okay, so I'll go with form.c and we'll save it as demo24.c, right? Okay, and यहाँ पे what we'll go with is the application that we are going to study over here is two variables के values को swap करना है, right? So what I mean by that, observe this. For example, I'll be defining the variable a with the value as 5 and b with the value as 6, right? So a and b का value को मुझे swap करना है. मतलब before swapping a का value is 5, b का value is 6. After swapping a का value होना चाहिए 6 and b का value होना चाहिए 5, and वो अचीव करना है with the help of what functions, and वहां पे स्टडी करेंगे what is called by value and what is called by reference, right? So यहाँ पे what I'll do is printf पहले करते हैं and we'll go with before swapping a is equal to %d and I'll go with b is equal to what %d, right? And a and b के values को यहाँ पे print करेंगे, right? What I'll do is printf and यहाँ पे I'll go with after swapping a is equal to %d and b is equal to what %d, right? A comma b. So let's save this and compiler is happy. रन करेंगे. अभी स्वैपिंग अटेम्प्ट नहीं किया है तो a का वैल्यू 5 बिफोर स्वैपिंग, b का वैल्यू 6 बिफोर स्वैपिंग एज वेल एज आफ्टर स्वैपिंग आल्सो. एंड इस बीच में मतलब बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग के बीच में कॉल करेंगे स्वैप फंक्शन को एंड इसको पास करेंगे द एक्चुअल आर्गुमेंट्स एज a एंड b, राइट? ओके, अभी ध्यान से देखना है. थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच में चलेंगे जहां पे इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द फंक्शन एंड डिफाइनिंग इट आई कॉल्ड द फंक्शन फर्स्ट. तो अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन कॉल को देख के आपको ये पता चल रहा है क्या कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है एज वेल एज डिफाइन कैसे करना है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी कीन मैनर, राइट? जब भी आप किसी फंक्शन का कॉल को देखते हैं, फंक्शन कॉल इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू टू थिंग्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम बताता है, एंड हाउ मेनी पैरामीटर इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट, ऑब्वियसली.
So name of the function is swap and parameters are what? Two parameters and of what type? So these parameters are of what type? Integer type, right? तो ये दोनों चीजें पता चली है, पर फंक्शन के बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से फंक्शन गोज विथ रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम फॉलोड बाय व्हाट? इनपुट पैरामीटर्स, राइट? ओके, सो हम लोगों को ये दोनों चीजें तो पता चल गई। फंक्शन नेम इज स्वैप, इनपुट पैरामीटर टू पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर, पर अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉल को देख के, बहुत ही आसान चीज है, राइट? सो स्वैप से निकला हुआ वैल्यू किसी चीज को असाइन कर रहे हैं क्या? वी आर नॉट असाइनिंग इट टू एनीथिंग। सो स्वैप में से हम लोगों को रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, सो विल बी कीपिंग द रिटर्न टाइप इन दैट केस एज व्हाट? वॉइड। तो सिंपल है फंक्शन को डिक्लेयर करना by looking into what? Call to the function. So let's go on declaring that function before main. So function का declaration ऐसे होगा, I don't want anything written from this function. Name of the function is swap and I'll go with integer x comma integer y, right? So integer x and y are formal parameters and actual parameters are my a and b, right? Okay, so यहाँ पे what I'll do is इसको define करते हैं and defining के लिए I'll go with void swap declaration as it is integer x comma integer y and यहाँ पे we'll go with swapping के लिए एक variable लेंगे temporary variable and what will be the logic for swapping, right? Do you agree that अभी तक के knowledge के हिसाब से a का value will get copied into what? x and b का value will get copied into y and फिर x and y में जो values है, सपोज x में वैल्यू है 5 एंड y में वैल्यू है 6, इनको स्वैप करना है। सो स्वैपिंग करने के लिए विल यूज वन टेम्पररी वेरिएबल, लेट अस से टेम्प। सो व्हाट विल डू इज x का वैल्यू पहले टेम्प में लाके रखेंगे, राइट? फिर x का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा 6 एंड नाउ ये जो 5 है वो y में डाल देंगे, राइट? ओके, ऐसे करना है हम लोगों को। सो पहला x का वैल्यू टेम्प में, then y का वैल्यू x में and then temp का वैल्यू y में. This is what the process that we are working on for swapping of these two numbers, right? So what I'll do is let's go on writing the code. So पहले x का वैल्यू temp में लाते हैं. So temp is equal to what? x. Then x को अभी चेंज कर सकते हैं. x is equal to what? y. And then y में लाएंगे what? temp का वैल्यू, right? Okay. So यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, मतलब स्वैप फंक्शन के अंदर, वहां पे वो x एंड y वैल्यू स्वैप हुए है या नहीं वो भी चेक करेंगे। सो आई विल गो विथ इनसाइड स्वैप फंक्शन, राइट? x इज इक्वल टू %d एंड y इज इक्वल टू %d एंड यहां पे करेंगे x एंड y, राइट? ओके, सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो अक्रॉस दिस। इस कोड को पहले रन करके चेक करते हैं कि अपना इंटेंशन जो स्वैपिंग का है वो हो रहा है या नहीं, राइट? ओके, let's go on saving this, ask it to the compiler is happy with the code and let's run the code, right? Okay, कोड को रन करने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है। बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, नो डाउट, राइट? स्वैप फंक्शन के अंदर x का वैल्यू 6 हुआ एंड y का वैल्यू 5 हुआ, मतलब वो स्वैप हुए। बट जैसे ही आप मेन फंक्शन में आए तो वहां पे a का वैल्यू 5 ही रहा एंड b का वैल्यू 6। जो अपना इंटेंशन था, मतलब a एंड b के वैल्यू को स्वैप करने का, इज दैट फुलफिल्ड? ऑब्वियसली नो, बिकॉज बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a is 5 and 6 and after swapping also the value of a is 5 as well as 6, तो उनका स्वैपिंग नहीं हुआ। ये हमको चेक करना है कि स्वैपिंग क्यों नहीं हुआ। सो लेट्स मूव इनटू द कोड टू चेक आउट हाउ दिस बिहेव्स, राइट? ओके, तो यहाँ पे डीबग जब करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट? ऑब्जर्व दिस एंड देन फिर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे एंड फिर कंक्लूजन में चलेंगे कि कॉल बाय वैल्यू प्रोसेस में क्या होता है, राइट? सो ऑब्जर्व दिस। नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस डिबगिंग प्रोसेस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो 5 टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव सीन। कौन से? कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन, actual parameters, formal parameters and scope, right? So who is the calling function? Main is the calling function. किसको कॉल किया जा रहा है?
स्वैप को कॉल किया जा रहा है. सो स्वैप इज अ कॉल्ड फंक्शन. ड्यूरिंग द कॉल वॉट एवर वी आर पासिंग दोज पैरामीटर्स आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में जो यूज होंगे उनको कहेंगे व्हाट, फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट. एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स इज लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड. तो ए एंड बी लिमिटेड है, सीमित है, किसके लिए, मेन के लिए. एक्स वाई एंड टेम्प आर available only within what, swap. Unka scope is limited to what, swap function. So let's move into the debugging activity to check out how this behaves, right? Okay, so I'll go ahead into this process, and now when I go ahead, यहां पे ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कुछ वेरिएबल्स को, एंड दोज वेरिएबल्स आर ए एज वेल एज बी, नेक्स्ट इज एक्स, next is y, and next is temp, right? Okay, so at this moment, do you agree that a and b gets the life because we are having the control inside what, main, but yet they are holding the garbage values because ये लाइन से जब आगे जाएंगे तो वो इनिशियलाइज होंगे. प्लीज ऑब्जर्व दिस. Now A got 5, B got 6, and still X, Y, and temp are undefined because they are out of scope, right? Okay, तो यहाँ पे आते हैं and we are able to see यूजर स्क्रीन दिखाता हूँ. बिफोर स्वैपिंग A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं. And now we are moving and we are calling the swap function. And when any function is called, control is transferred from calling function into what, called function. तो यहाँ पे ध्यान से देख कैसे ट्रांजिशन हुआ. वी आर आउट ऑफ मेन, सो ए एंड बी इज नाउ आउट ऑफ स्कोप. एंड हु इज इन द स्कोप नाउ, एक्स एंड वाई. एंड प्लीज ऑब्जर्व, ए का वैल्यू गेट्स कॉपीड इन एक्स and b का value gets copied in y. And as the values of actual parameter are copied into formal parameter, this calling convention is known as call by values. As the values of actual parameter are copied into फॉर्मल पैरामीटर, वी कॉल दिस एज व्हाट, कॉल बाय वैल्यू. ये तो उसका डेफिनेशन है, राइट. अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है. नाउ टेम्प इज होल्डिंग गार्बेज वैल्यू. अभी टेम्प के अंदर एक्स का वैल्यू आ गया 5, तो एक्स को चेंज कर सकते हैं वाई के वैल्यू से. सो वाई का वैल्यू गोज इन एक्स. प्लीज ऑब्जर्व, राइट. एक्स में आ गया 6 एंड नाउ वाई में टेम्प का वैल्यू डाल देंगे. सो नाउ यहाँ पे उनका स्वैपिंग हुआ, राइट. बट यहाँ पे प्रिंटिंग भी हुआ कि इनसाइड द स्वैप फंक्शन the x का value becomes 6 and y becomes 5, right? Okay, and when we come back into the main, please observe, now x, y and temp are undefined because they are out of scope now. And जैसे ही main में वापस आए, are there some changes that has happened to a and b? No, they are as it is intact. उनके values 5 and 6 ही हैं, वो change हुए नहीं. तो values किसके change हुए, x and y के, inside what, this function, right? तो यहाँ पे जिस इंटेंशन के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा, स्वैपिंग करने के लिए, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज के लिए, राइट. तो इज दैट गेटिंग फुलफिल्ड? ऑब्वियसली नॉट. तो कॉल बाय वैल्यू स्वैपिंग एप्लीकेशंस के लिए ड्रॉबैक के रूप में उभर के आ रहा है, राइट. सो लेट्स सी लाइक व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये क्यों हो रहा है, एंड देन विल गेट टू नो some very genuine aspect about call by values, and फिर conclude कर पाएंगे with respect to a very genuine two statements जो आपको इंटरव्यू में कहने हैं या वाइवा में कहने हैं या आपको उसको याद करना है, right? So let's see like pictorial representation of what is happening through this. So let's see like what is happening into the code. So what we have is main function, and inside main function we have two variables, a is equal to 5 and b is equal to 6. I'm not writing the complete code, right? Okay, and यहाँ पे इनको declare किया था as an integer, and then we call which function, swap function, by passing the actual parameters, that is a and b, right? Okay, so now यहाँ पे जब इनको पास किया तो we could be able to see that इनके values copy हुए किसमें, formal parameters में, right? तो swap function कैसे लिखा था, so यहाँ पे void swap
integer x comma integer y, right? Okay, and यहाँ पे we use one variable that is integer temp for swapping purpose, and temp में value ले लिया किसका, x का, हाँ, then x can be replaced with y value, and then y can be replaced with what, temp value. This we have done, right? Okay, now according to the specific terminologies of the function, the main function is known as what, calling function, right? यहाँ पे swap is known as what, called function. And when any function is called, right, कैसे control flow है, when any function is called, control is transferred from calling function into called function. After execution of that function, control goes back into what, calling function. ये तो हमको पता है, right? Second genuine aspect that we need to understand over here is, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो as we are calling this, right, we call this as what, actual parameters. ये है actual and these are your formal. These are what, formal parameter. So what happens during this function call, right? The value of a is getting copied into what, x, and the value of b is getting copied into what, y, right? क्या copy हो रहा है, values. And as the values of actual parameter are copied into formal parameter, we call this convention as call by values, right? Okay. Abhi, सबसे important aspect. Now, this is what the entity that we already know, right? Okay. So, यहाँ पे उसको रखते हैं, right? Okay. And let us now talk about the scope of the variables that we have. A and B का scope is limited for main, temp x and y are limited for what, swap. So यहाँ पे जब मैं A वेरिएबल के लिए बात कर रहा हूँ, A बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ 5 and B वेरिएबल के कंटेंट बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ, that is what, 6. And यहाँ पे when I go with x values कॉपी हुए तो initially it becomes what, 5, and y initially it becomes what, 6, right? Okay, and temp में initially क्या वैल्यू था, गार्बेज वैल्यू था, राइट? ओके, एंड देन x का वैल्यू इज कॉपीड इनटू temp, सो x में temp में आ गया 5, y का वैल्यू इज कॉपीड इनटू x, तो यहाँ पे आ गया 6, एंड temp का वैल्यू इज कॉपीड इनटू y, तो यहाँ पे आ गया 5, राइट? Is it making any changes to A and B? Definitely not, right? So जब भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू के साथ काम करते हैं तो कंक्लूजन के रूप में प्लीज सी व्हाट वी आर गोइंग टू से. In call by value, values of actual parameter are copied into formal parameters. In call by value, values of actual parameter are copied into what, formal parameters. And as formal parameters are different variable at different memory location in different scope. Repeat कर रहा हूं, as formal parameters are different variable at different memory location and in different scope, changes done with formal parameters are not reflected in actual parameters. इनमें किए गए चेंजेस वो अलग वेरिएबल है, अलग मेमोरी लोकेशन पे है, अलग स्कोप में है, उनके साथ किए गए चेंजेस कहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? ओके, सो स्वैपिंग के केस में कॉल बाय वैल्यू जो है वो ड्रॉबैक के रूप में उभर के आ रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? देन फिर क्यों यूज करना है कॉल बाय वैल्यू को? सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे यू आर इन नीड ऑफ कि एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यूज को आपको चेंज होने नहीं देना है. तो उस केस में डेफिनेटली द मोस्ट prominent aspect to use as a convention is call by value calling convention, right? तो उस केस में वो एडवांटेज के रूप में काम करेगा. अभी इस केस में दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ डिसएडवांटेज ऑफ कॉल बाय वैल्यू बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग व्हाट, एक्चुअल पैरामीटर, पर एज formal parameters are different variable at different memory location in different scope, we are unable to have the changes reflected into what, actual parameters, right? So this is how you can work with call by value. So एक बार conclude करते हैं with respect to the two statements that we made about what, call by values. So in call by value calling convention,
values of actual parameter are copied into formal parameters. And as formal parameters are different variable at different memory location in different scope, changes done with them are not reflected in actual parameters. And this is what call by value process is. So obvious concept comes as, if we want to make the changes into this actual parameter, then what do we have? And that is what the next topic to come. And there we are going to study call by references, जहाँ पे actual arguments में हम लोग changes होते हुए देख पाएंगे. राइट सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. आई होप कि यू अंडरस्टूड कॉल बाय वैल्यू. एंड इंटरव्यू में कहना है दो स्टेटमेंट, उसको वापस रिपीट कर रहा हूं. In call by value, values of actual parameter are copied into formal parameters, and as formal parameters are different variable at different memory location in different scope, changes done with them are not reflected in actual parameters. सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. जरूर ये कोड आपकी मशीन के ऊपर करके देखना है. एंड प्लीज ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कॉल बाय वैल्यू प्रोसेस इज. Very interesting one, right? Okay, so keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.